Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, this is Farhan Mahmood and you are watching Math Screen, and in this video I'm going to teach you the topic which is very important in A levels P3 mathematics. That topic is called the complex number. As its name, it is not complex. So the thing is that the 40-45% of it is very simple, बहुत आसान है, and the rest of 60% is a bit difficult. But if you do focus on it, if you concentrate on the rules, then you'll grip and you can solve the things, you can solve the questions, you can solve the problem easily. So in the first two videos, in the first 2-3 videos, I'm going to tell you the rules and then फिर हम past paper भी solve करेंगे ताकि आपके ideas जो हैं वो इस topic के बारे में clear हो जाएं. So आइए start करते हैं, देखते हैं कि complex number क्या है और किस तरह से हमने इसको लेकर आगे चलाना है. So basic rules पे ही you need to focus on the basic rules, initial rules, ताकि आगे जाके अगर question complex होते हैं तो फिर आप उनको आराम से समझ पाएं. So start करते हैं students. देखिए start में आपको ऐसे कराऊंगा कि like if we have square root of 36, what does it mean? हम इसको कैसे solve करते हैं? It's very simple to solve. We can say that it is 6. Yes, it is 6. But what if we have minus 36? We have a negative sign inside the square root, so we cannot solve this. Now, you can write 36 times minus 1. Yes, because 36 times minus 1 is minus 36. Okay, so then you can write 36 and under root of minus 1. Now we can easily solve this and we can write 6 instead of this. But what about this? This is under root minus 1. So under root minus 1 जब भी आपको मिलेगा तो आपने उसको एक symbol से represent करना है, and that symbol is I and it is called iota. ठीक है? So हम इसको कहते हैं iota. So under root minus 1 is iota. Understand students? This is called iota. So what if we take square on it? अगर मैं इसके ऊपर square ले लेता हूँ, so iota square बन जाएगा. So square से square root cancel कर दीजिए and minus 1 is equals to iota square. So two things are really important here. पहला चीज़ क्या है कि under root minus 1 is iota and iota square is minus 1. So these two things are important. Okay, what if we have, like if we have minus 18 under root, then this means you can write minus 1 times 18 and then you can separate the roots and you can write under root 18 times minus 1 times under root minus 1. Under root 18 can be solved. You need to separate the square factor, write 9 times 2 and times under root minus 1. 3 is a perfect square, so you can take out 3 and you can write 3 under root 2, and for this we can write iota. So now the number with the iota is called imaginary number. The real number with the iota is called imaginary number. Okay, like what is imaginary number? मैं आपको उसको डिटेल से समझाता हूँ, बट इधर ये बताना ज़रूरी था कि अंडर रूट के अंदर -1 आए तो आपने ओ लेवल्स की तरह इसको नो फर्दर सोल्यूशन नहीं लिखना, बल्कि आगे उसको सॉल्व करना है. ठीक है, अब हम ये चीज़ समझते हैं कि जब z लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब है कि z इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर. Complex number has two parts. Okay, what are the two parts of complex number? It is a plus b iota, or you can also say that x plus y iota. A plus b iota and x plus y iota. In this a plus b iota, a is the real part. A is called the real part of this complex number, and this b iota is imaginary part. This is called imaginary part. बट अगर इसको गौर से देखते हो b iota, so ये b क्या चीज़ है? b is also a real number. So a and b must be real. आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है कि a और b real होंगे. ठीक है, b के साथ iota लगा हुआ होगा जो मिलकर b और iota imaginary number बन जाएंगे. बट अगर हम separately देखें तो a भी real है और b भी real है, यानी इमेजिनरी के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आयोटा विद सम रियल नंबर.
सो इस चीज़ को जहन में रखना है। ए और बी का आंसर हम जब भी लिखेंगे वो कभी भी कोई नेगेटिव स्क्वायर के अंदर या लाइक इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता, उसके अंदर आयोटा नहीं आ सकता, क्योंकि आयोटा तो ऑलरेडी हमारे साथ बी आयोटा है या वाई आयोटा है। इस चीज़ को जहन में रखिए, ए एंड बी मस्ट हैव द रियल पार्ट, द रियल वैल्यूज। Okay जी, so we have this, we have a plus b iota and x plus y iota, they both are same because like हम represent करने का method different है। तो हमें ये पता लग गया कि complex number असल में होता क्या है, इसके दो parts हैं, one is real and the other is imaginary, ठीक है। So the real part is separate, it doesn't have the iota with it, लेकिन जो imaginary part है उसमें एक real नंबर होगा एंड उसके साथ इमेजिनरी वैल्यूज, उसके साथ जो है आयोटा लगा होगा जो इसको कॉम्प्लेक्स बना देगा। सो लाइक अब हम इसके अलजेब्रा की तरफ चलते हैं। सो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हाउ टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर? वी हैव z1, that is we can say that 2 plus 3i, and z2 we can say that it is 4 minus 2i. Okay, so what if we add these two? हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कैसे लिखेंगे? 2 plus 3 iota plus 4 minus 2 iota. So it is simple algebra. आपने क्या करना है? रियल को रियल के साथ ऐड कर देना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर देना है। So 2 plus 4, okay, and then you can write 3 iota minus 2 iota. So they are 6, and these two together is just 1 iota, or you can write iota. So here a is 6 and b is 1. Okay, what if we do the subtraction of complex number? देखिए सेम ले लेते हैं, अगर हम करें यहाँ पे 2 plus 3i minus 4 minus 2i. So first open the brackets, 2 plus 3i minus 4 minus minus get plus 2i. So 2 minus 4 is minus 2 and 3 plus 2 is 5. So this time we have minus 2 plus 5 iota. This is a new complex number. So हमने इसका एडिशन भी समझ लिया, हमने इसका सब्ट्रैक्शन भी समझ लिया। अब हम आते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ एंड देन फिर इसके डिवीजन की तरफ भी आएंगे। सो मल्टीप्लिकेशन में like if we take the same numbers, 2 plus 3 iota times 4 minus 2 iota, and we need to multiply these two complex number. So it is simple. First 2 with 4, it is 8, then 2 with minus 2 iota, it is minus 4 iota, and then 3 iota with 4, it is plus 12 iota, and then 3 iota with minus 2, 3 times minus 2 is minus 6, and iota square. So now 8, these two are similar, so we can add minus 2 or minus 4i plus 12i is 8i, and minus 6i square. What is iota square? I told you थोड़ी देर पहले कि iota square क्या होता है? It is minus 1. ये चीज़ याद रखनी है, it is important. So you can write minus 1 here, and 8 plus 8i minus minus is plus 6. Now 8 plus 6 is 14 plus 8i. Now this is a new complex number. Actually the product, the result of the multiplication of these two is here. Okay, so आपने देखा कि multiplication भी बहुत आसान है, simple algebra है। अब हम करते हैं इसकी division किस तरह से होनी है। So division of two complex numbers. So how to divide two complex number? If we have 2 plus 3i and 4 minus 2i, हमने इनको divide करना है। So किस तरह से हम इसको divide करेंगे? Before performing the division of two complex number, we need to understand what is conjugate. हमें देखना है कि conjugate actually होता क्या है, conjugate of a complex number. It is very important, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। So इस छोटे से part के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। If we take any complex number, like in general, if we have a plus bi, और हमें इसका ये if it is z,
एंड वी नीड टू फाइंड द कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जी स्टार से, और कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दोगे आप. तो जस्ट चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट तो कॉन्जुगेट बन जाएगा. सो अगर हमारे पास होता है z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9i, हम इसका अगर c स्टार यानी कॉन्जुगेट लेते हैं तो 4 माइनस 9i होगा. सो अंडरस्टैंड, आपको पता लगा? ओके जी, सो ये कॉन्जुगेट क्लियर हो गया. सो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज किस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2i, और उसी से डिवाइड कर देंगे 4 प्लस 2i. दिस इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन, ठीक है, थ्रू द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. सो अब आपको क्या करना है, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा, और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, 4 टाइम्स 2 इज 8 एंड 2 टाइम्स 2 इज 4i, and 3 times 4 is 12i, and then 3 times 2i, 3i times 2i is 6i square. And in denominator you can notice that we can apply identity here, a minus b and a plus b, so you can write 4 square minus 2 iota square. So first of all, 8 as it is, we can add these two numbers because they both have iota. So 16i, and for this just write 6, and for iota is actually, iota square is minus 1. So you can replace this iota square with minus 1, and in the denominator we have 16 because the square of 4 is 16, and the square of 2 is 4, and that of iota is minus 1. So like we have a negative sign here, this, and make a bracket and write 4 times minus 1, which is minus 4. In the next step, this is minus 6 now. So 8 minus 6 is 2, and then 16i, and what about the denominator? So minus get plus, and 16 plus 4 is 20. So we have 20 as denominator. Now if we do further simplification, we have 2 plus 16i upon 20. So you cannot write the complex number as a simple fraction. You need to break the LCM. You need to break the LCM into 2, like we need to write 2 upon 20 plus 16i upon 20. Now you can simplify, you can write 1 upon 10 and plus like 4 times and 4 5 times, so 4 upon 5i. So now we have the complex number in the form of a plus bi or x plus yi. This is how we do the division of two complex number by using the method of rationalization of conjugates of denominator. So I hope कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. You need to practice. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के रूल्स को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपके आइडियाज़ जो हैं वो और क्लियर हो जाए.